and we'll be good to go. Greetings, everyone. Welcome to that time of the day where we get to talk with people whom we all look up to. Well, today we have someone called Harsh Mishra. So, Harsh is someone whom I've been talking from a few days, but more importantly, guess what? He is someone who made the thumbnails for videos that you might have already watched a couple of times, like a lot of times, in fact. The YouTube channel for which he works has got more than 7.7 million subscribers. You know how much that is? So it's more than 7 crore 70 lakh people plus. Yeah, that's just a conversion though. At the end of the day, this is something that you shouldn't miss, because throughout random scrolling, people say that scrolling is basically smoking. During that time of smoking on the internet, how do let's say thumbnail designers ensure that you tap on that specific design? That's a huge business from now, and guess what, that's a huge career opportunity too. And Harsh is a dropout. Yeah, he is a dropout. He specifically mentioned me that he is a dropout. So yeah, Harsh, welcome to Bluelearn. Yeah, thank you, man, for this warm welcome. So basically, the thing is that we used to scroll on YouTube, and we think that okay, so this is the video, and we have to scroll, and that's the thing. But the basic thing is that we as a thumbnail designer, we have to understand why this thumbnail is actually created for this video, this specific video. Yeah. Okay, guys, before going forward, we have 41 people with us at the moment. Can I see number 1 in the chat? The number 1 in the chat. Fast. Guys, it's just one number that I'm asking, but I want you to be responsive, because this event is going to be completely run by you guys. Because you ask any question, I'm going to run the discussion in that way. So any question about anything, we can truly discuss about that. At the end of the day, feel free to ask any questions at any point of time. Use the chat, and there we go. Along with that, if you all are comfortable with Hindi, press number 2 in the chat. If not, put number 0 in the chat. 2 if you are comfortable with Hindi, 0 if you're not. Okay, we have Pradeep. Okay, cool. T7, ठीक or okay, we have couple of people who are not comfortable in Hindi. ठीक है guys, I totally understand, because मुझे भी हिंदी उतना समझ में नहीं आता, पर it's fine, we all are on the same page. Don't worry, I'll try to make it as much English as possible. Harsh, this is something to keep in mind. तो चलिए शुरू करते हैं. Welcome. What's up? क्या चल रहा है इन दिनों में? So मैं बताऊं? Yeah, I'm asking you. Yeah. What's up? So all good. Completely busy schedule. Okay. So how do you work at Josh Talks? Like, is Josh Talks a very, very hustle place, or how is it like? No, it is actually a good environment. They have a great environment. And you know what? We all as consider as partners, like we are working in the, the team in which I am working, it actually a Josh Talk Hindi team. Okay. So so basically, if you see the community post and the thumbnails that recently uploaded, all are created by me. And the new thing, all the new designs of the community posts are created by me, and they are actually appreciating for every new change which actually works. And the best thing is that I also have a YouTube channel. So they give me an opportunity to learn about YouTube more, like how I can also create a video. So that is the best thing about the Joe Stock is they have a great channels. Correct. And they have multiple, they have a regional channels, like they have channels in regional languages. So they actually tell me that, Harsh, you have to understand this thing, that regional language are also important. So yeah, that is the thing. So totally. That's where another question of mine comes in. Like, guys, just for the audience, this is something that we are experimenting new in Bluelearn events. We start with basic introduction, and then we dwell deep into the core team, and then we talk about the work culture, not the work culture alone. We talk about how to make thumbnails that are captivating. So we're going to share screen, and we're going to go review a few thumbnails. And at the end, there is something very special. We're going to get to know, at least we're going to ask Harsh about how much he makes. So yeah, if you are someone who is interested to know how much an Indian thumbnail designer, for a huge amount of, let's say, 7.7 billion subscribers, that's how much Josh Talks Hindi has got subscribers. And if you want to know how much that number,
the amount he's getting paid, you got to stay tuned till the very end of this discussion. So, Harsh, can we begin? Deep dive into the discussion. Yeah. Sure. So, tell me a little bit about your story. From how old are you? Yeah, basically I'm 18. So Oh, currently okay. I'm 18. Just, Okay. on January I became 18. Okay. Guys, can we see a little bit of reaction with emojis or gifs or okay, emojis in the chat? He's 18 only. Okay. Guys, feel free to react over there. All right. So, okay, he is just 18 and he is like completely dropped out. That basically means that it is pretty good enough for a career. Harsh, so like 18 is basically like you graduated from college, right? Yeah, Second not year of college. Nah, Okay. I have completed 12th last year. Okay. That's what we call college here in South India. Cool. And Yeah. Tell me, yeah, why did so- you drop out? Why didn't you go for IIT, JE exam and then become a good engineer and make India ka naam roshan? yeah. Okay. So let me begin with my story. So Okay. basically, last year I was actually, because of the COVID, I was so much, in the dilemma thing ki, what I will go to do, what is my worth, and my parents are scolding me why you're sleeping day and using your time on night, because that time I usually spend my whole time on night Okay. to explore things like what is Okay. actually happening in this world, what people Uh-huh. are doing, what is freelancing and all the things. So I was trying to understand what I can do. But you know what? There was a thing which actually, makes me always sad, or you can say confused about what I can do in future. Like because the preparation was actually a shit. I didn't prepare anything, not for the boards, not for the JE, because boards was cancelled and JE have the 4 attempts. So yeah, I thought I will prepare, but that actually happened. I didn't and you get a chance to prepare thing. And there I find that a way I should take a drop for JEE. So there is a first disclaimer about before starting this. I didn't take in a dropout from college. I will go college this year. So this is the first thing I wanted to share. I didn't take a dropout from everything, not making it as a career into thumbnail designer, so becoming India's biggest thumbnail designer or a millionaire thumbnail designer. I am actually taking it to more over ki people understand this is the person who is actually creating the best thumbnails. So yeah. Got it. See, So from a point of being nobody to a point of this person who makes the best thumbnails, because it's not easy, right? We know the big brains behind Joe Stocks. Do you get a chance to talk to Manish? yeah, I get a chance. Like, do you interact with him regularly? Not regularly, because he's too busy into taking sessions on that, Tag Mango, and all the people are taking him to come into session and take the creators, guidance. So yeah, it looks like it's his time. Like everybody's like calling him. He's on the limelight. Yeah. So yeah, we have actually got a talk by Josh people has actually planned a schedule for those who are actually interested in talking with him. So he taken a schedule. So he actually make a schedule for us to understand. Got it. Guys, guess what? Manish, basically his Twitter handle is called Join to Manish. He is very famous, like recently. Ranveer Alapadia, right? AKA Beer Biceps. Manish is one of the early mentors of Ranveer. Guess what? Today, Beer Biceps podcast is in that position only because of Manish. And he's the same brain behind what today Joe Stocks is. So what does Manish exactly do? Is he like a co-founder? He is not actually a co-founder. He's actually, he actually understanding what actually Joe Stock is working, how Joe Stock is working, and what things should improve. So he's like a consultant. Yeah. And the same thing is actually doing with all the YouTubers. The name he's actually mentioning every time. Like we all know, like he's doing the same thing with Ranveer also. Like just consulting and telling that this is the wrong thing, this is the good thing, this you should try, and this change you have to do. Correct. Does he really provide that amount of value? Yeah. This Manish man is really great. You know what? I asked him the question. He actually make me, stunned, and I was listening him, and I was like, man, he's a god. Tell me about it. Yeah. So basically, when I got a chance to talk with Manish, I actually asked him the one basic question which I have in my heart and my mind was, I asked him, see, I have taken a draw from JEE to tell my parent that I am not eligible to give a JEE and I am not interested in going IITs. So my parents are telling me, you are doing
doing a wrong thing, and you are just wasting your time, and this time is really important. So I told Manish ki Manish, now I am in the Joe stock, and this is really a great achievement, but my parents are always telling me that this is not a permanent thing, you are not going to success in your life. So Manish told me, if you believe in your work, there's a two option for yourself. Plan for the 4 year, because after giving JE you have 4 year to do. So Okay. first of all, either plan 4 year what you are going to do, create a complete roadmap and show it to your parents and tell them, okay, this is the complete roadmap, and I will follow it, and after this, if I will not able to follow this complete roadmap, tell me that whatever one degree you want me to go with. So yeah. And the second option, he told me to leave the home. Go out. Just leave the home and go out, because you No, no, are no. Manish always has this very good accent in Hindi. Yeah. He speaks really, really well in Hindi. Like whatever you said, can you tell it in his own words, the way he told you in Hindi? So yeah, तो मैं हिंदी में बताता हूँ. Like basically मैंने उनसे पूछा कि देखो मनीष, ऐसा है कि मैं आपके ना जो स्टॉक सुनता हूँ, अपने घर वालों को भी सुनाता हूँ, और उनसे कहता हूँ देखो यार, मैं जो कर रहा हूँ ना, उन्होंने ये कर रखा है, ठीक है. लिटरली तो घर वाले कहते हैं कि यार एक आदमी कर लेता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता. एंड द सेकंड थिंग ही टोल्ड माय पेरेंट कि यार देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मजाक मस्ती के लिए सही है, ठीक है, ये तुम्हें जब तक तुमको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं तब तक सही है, लेकिन क्या तुम इसे फ्यूचर में सस्टेन कर पाओगे, इससे तुम्हें क्या ऐसी अर्निंग मिल जाएगी कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे या कुछ कर पाओगे. बीटेक के बाद तुम इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर की सैलरी ज्यादा होती है एंड तुम अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो एंड ऑल थिंग. तो आई आस्क्ड मनीष, तो मनीष ने कहा देख, तू जो कर रहा है ना, उन्होंने कहा देख, मैं तेरे को एक बात कहूंगा ना, तेरे को बुरी लग सकती है. वो ऐसा बोलते डायरेक्ट कि मैं तेरे को ऐसी बातें बोलूंगा ना, तेरे को बुरी लग सकती है. पहला उनका यही होता है कि मैं जो कहूंगा वो तेरे को बुरी लग सकती है. उन्होंने बोला देख, तू एक पेपर ले, 4 साल का बीटेक होता है, जेई देने के बाद तू जाएगा बीटेक करने, ठीक है. कहता इतना तो मेरे को पता है, ठीक है, कि तू 4 साल का बीटेक करेगा. वो 4 साल का तू रोड मैप बना, ठीक है, घर वालों को जाके दिखा और कह दे ये 4 साल में ये मेरा कंप्लीट रोड मैप है, मेरे को ये चीजें करनी है, ये चीजें अचीव करनी है लाइफ में. ये 4 साल में अगर मैं कर पाया, अगर मैं कर पाया तो मुझे आगे करने देना, नहीं तो तुम जो डिग्री आप बोलोगे मैं वो कर लूंगा, क्योंकि 4 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं अभी 18 का हूँ और 8 4 अभी 22 साल का ही होऊंगा. तो आप मुझे जो डिग्री बोलोगे वो डिग्री. 22 means how much? 22. 22. हाँ, ठीक है. Okay, please continue. Yeah. So he told me कि after tell your parent, and the second option, अगर वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो घर छोड़ दे. कहते घर छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया अपना कि अगर मैं सिलवासा में होता ना, his जो स्टॉक वीडियो. सिलवासा का मतलब क्या होता है? There is a place in Bihar that called Silvassa. So his farmer was working as a labor actually. His father was working as a farmer laborer. Okay. Labor. And Manish also went there, and not going into college, he also go there to work as labor because they are so much poor. Okay. So he worked as labor. तो उन्होंने हिंदी में मेरे को बोला कि देख, अगर मैं सिलवासा में होता तो आज मैं मजदूर होता वहां पे, और तू मेरे को ऐसे सुन नहीं रहा होता यहाँ पे. मजदूर का मतलब लेबर. ओके हाँ. So he told me कि you can't find me here. मैं तेरे सामने ऐसे जोश में बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा होता, मैं वहां पे मजदूरी कर रहा होता, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना वो जगह छोड़ा ना, बाहर निकला और मैंने ये अचीव करा. कहता ये तो है. उन्होंने कहा ना, हर्ष तू जो कर रहा है ना, तुझे पता है तू कितनी मेहनत कर रहा है. उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने दिन के 24 घंटे काम कर रहे हैं, समझ रहा है, मैं सो भी नहीं पाता था, मैंने इतने काम किए घर छोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे रहने के. मैं वहां से निकला और मेरे पास पैसे नहीं थे, और पता है उन्होंने बताया कि ही टोल्ड कि ही एक्चुअली यूज्ड टू मसाज पीपल फॉर अर्निंग, फॉर सेक ऑफ अर्निंग. ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स. उन्होंने कहा ही टेल दैट कि जितना तुमने जो स्टॉक में सुना है ना, जितना मैंने लोगों से कहा है ना, लाइफ में whatever the pain and the blood we actually lost into the process, in the journey, we never told people that. This thumbnail journey, I have seen my parents scolding me in that way कि you cannot achieve in your life anything, that way. And why I'm telling this thing into this Joe stock thing. So he told me there are a lot of blood and pain we actually lost in the journey, and that we not tell in our success stories and all. We actually hide this from the people. So he told me कि I have used that work ना, जिसको लोग देख के कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये भी करने की चीज है, but because I do not have the money, I have to sustain my life because I have left my home. So Harsh, you have to understand this thing, whatever you are doing,
if your parent is not supporting, if your parent is taking your leg back, no, you can't do it, this is not your thing. तो उन्होंने एक चीज कही थी, all the big YouTuber जिनको तुम जानते हो आज, जिनको भी, उन सब के पेरेंट ने कहा था YouTube नहीं चलेगा, that YouTube thing is not going to work. ठीक है ये हाँ. सब ठीक है. Let's get back onto the point where you were talking about this thing. Like, what actually made you realize that you want to be a thumbnail designer? Like, what was the beginning? You mentioned that you were working like nearly 16 hours a day. Your day starts in the night. You work whole night. And do what? Like, how did it actually trigger? ये कैसे चालू हुआ ये पूरा? Like, it actually started from when I joined. So after that lockdown, there was an opening. So I went my school. So there was a friend of mine. His name is Arshit. He actually told me about Discord. उन्होंने कहा कि you are so much creative, तेरे YouTube चैनल वगैरह है, तेरे को सीखने को मिलेगा. So you joined a Discord server called Avalon Meta. Okay. So I joined there. I talk with people. I have seen people are earning. That freelancing thing, and that time I actually get to know about freelancing, and I was like, man, they are earning. Yeah, man, they are earning. If they can earn, I can earn. But at that time I do not have skills, so I used to go into their DM and frankly ask them. There was a guy called Alex. So, hey Alex, I am interested into graphic design because you are doing that, or not graphic design. I usually take the screenshot of their work and crop it and send them. Hey, I am interested in this work. What is this called? Just genuine question. I am really interested. I don't know what to work. What other platform I can follow? Just this thing. So I was asking a lot of people, and they told me about Photoshop and Illustrator and all the thing. So that time I didn't know about them. So I usually go to check out. So I get a feeling that if I have the laptop or a PC, then I will learn it. So अब तक तेरे पास लैपटॉप भी नहीं है? ना, didn't. ठीक है. So उस टाइम पे I thought कि okay, मैं कॉलेज में जाऊंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, कॉलेज की फीस पे हो जाएगी, ठीक है. जो एसेसरीज जो मेरे को लेनी है वो मैं ले लूंगा, ठीक है. उस समय तक कोई लैपटॉप नहीं था. ओके, तो मेरा यूट्यूब चैनल था, जो क्योंकि मैंने पिछले 5 यूट्यूब चैनल बना चुके हैं, ठीक है, लिटरल 5 यूट्यूब चैनल. तो उससे कहीं ना कहीं मेरा थंबनेल से जुड़ाव था, ठीक है. देयर वाज अ कनेक्शन फॉर मी विद द थंबनेल्स. So I was understanding my connection with thumbnail at that time. Okay, I have to create some good thumbnails, but I was not good at that. Okay, creating just random thumbnail and just doing that thing. So yeah, after that I get a point. I thought, okay, let's try something. Okay, so I got a little attention toward photo editing. So one second, I'll tell you something. Not just you. I think a lot of people who are working today, they have a YouTube channel in the past. I mean, everybody, there is some connection with YouTube. Like, even I had like 3 channels. Like, one is successfully running. I don't want to mention it now. But anyway, anyone from the audience, how many of you have a YouTube channel in the past? I mean, mera to 2 unsuccessful the. Like, very cringe. I look back and laugh upon that. Yeah, 5 minutes. Abhi bhi hai. See how many people are there in the chat. So YouTube has got a inevitable thing from a long time for everyone. Yeah, Simon. तो चलो बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे उन लोग उनका, पर अभी let's continue with the discussion. Okay. So yeah, guys, are you enjoying it? Are you enjoying this discussion? This is a very raw discussion that we are having. So shall we go forward in this line? Yeah. Guys, respond in the chat. That's the only way I understand that you are liking what we are trying to do. Okay. So let's continue. Okay. So yeah. So at that time, after joining the Discord and understanding the thing, मेरे फोन का स्टोरेज खत्म हो गया, मैं Discord डिलीट कर दिया. And उस समय मेरे भाई को क्रेज आया था क्राफ्ट का, ठीक है. तो I told my brother to create a YouTube channel and I will support him because now I have that experience कि YouTube कैसे चलता है. Okay. Because अब मेरे को समझ में आ गया था कंसिस्टेंसी मेरे अंदर नहीं है, मैं अपने भाई के अंदर ले आऊंगा. And you know what? I taken my brother's channel from 0 to 15K, taken one video viral to 70 lakh views on one video. So wait, what channel are we talking about? Are we talking about 5-minute crafts? No. My brother's channel is HD Craft. You can check now. His subscriber decreased because he is not uploading videos because of his 10th board. Yeah. What channel are we talking about? Like, how did it go from absolute 0 to 70 lakh views a video? Because it's basically 7 million. It is actually easy. You never know which video is going to be the viral video. Okay. That is the thing. And now in the journey, we have that thing called shorts. Okay.
we can make a video viral by Okay. just make So by just that's all fine. That's all fine. Shorts ka to, like, we will come to that. But now I want to know how exactly to make a really, really good thumbnail. You tell me that. Okay. So first of all, we all have that misconception, because I have talked with a lot of people who are actually doing, they are creating, some people who are actually creating great thumbnails, other industry level thumbnails. The big people like, people who are working with Ranveer Allahabadia, people who are working with Raj Shamani and Varun Maya. Okay. So I asked them one question. What is the one secret sauce of making thumbnail? Okay. And you know what? There's a one answer. Just create a story in your thumbnail which actually explain what they will get into the video. Okay, now Just- you share screen and show me any thumbnail and tell me the story. I want to really know that, because मैं ये सुना था कि वीडियो पे स्टोरी होना चाहिए, स्क्रिप्ट पे स्टोरी होना चाहिए, but thumbnail में कैसे लगाते हैं? Like, yeah, Okay. that's what I'm asking. Let me open the Brave browser so that I can I can understand, explain things more clearly. Okay, where is Brave? That's okay. That's okay. Take your time. In the meantime, Harsh, what are some of the things that you use? तू बात कर रहा है ना इसके बारे में, like you started working back when the days, like when you didn't even have a laptop. Yeah. तो उसके मतलब है कि like तेरे पास you didn't even have these apps. No Photoshop, no Figma, no Canva, because I hate Canva. yeah, from it's day just one. so template, huh? Yeah. So from day one, because that actually give me PicsArt. Yeah. PicsArt, huh? Okay. This is my man. This is my man. he know that PicsArt is great app. Okay. Yeah. So basically, I used to edit Do my you photos. do you use an iPad now, like an iPad Pro or something? Nah, I don't have that much money, man. So But for I will- iPad, I think people use Procreate, correct? Yeah. They used to, Okay, but not making for thumbnails. It actually used for making Designing. illustration. Yeah. Illustration and all. Continue. Yeah. Okay. So I was telling. Okay. Yeah, you were talking about you used to hate Canva, and then Yeah. what happened? Okay. So basically, I used to edit my photos. Okay. Making it little bit stylish and codeful. So Stylish there, ka matlab, don't tell me that you were here and there is a Rolls Royce over here and then there is a helicopter. No. I was never into that. I was never getting into that thing. But I used to try something, making little bit professional, like Vijay Mahar. Do you know Vijay Mahar? I think I do. Just checking. He used to edit photos for that big TikTokers. Riaz 14. Yep. I know Vijay Mahar. Yeah, I know him pretty well. Yeah. Man, he is too great, man. Now he is trying motion graphics. Awesome. I mean, he tapped that market so well that today he's making almost like multi-million dollars out of that. Yeah, that's true. Okay. So, okay. Is that TikToker still making money, or everybody cringed out of him? Yeah, they are making. Silence. Every creator is making, man, because you know what, every TikToker got a place, they got a place at Snapchat and all, because I have seen them daily creating. Yeah, continue. Yeah. Okay. So what I was actually talking about how actually I have started on PicsArt thing. Right. So basically I used to edit my photos, and I got a a little bit of inspiration of writing shairis. So I created a lot of shairis. Okay, let me show it, or yeah, screen share kar sakte ho na, like, okay, you have the permissions. Awesome. Okay, I think my screen is now sharing. Okay, now let us judge your that work. Yeah, I love Ali Abdal. Okay, thoda Instagram. Okay, so I have a page called I Am Not Shy, because I was shy, so much shy. That's why I'm not shy. Okay, so this is my page. So I used to create this type of, creating this type of images, like making noise and writing like this. And I was like this. Okay, that's good. No, we'll go to the thumbnail, telling a story and all of that. Okay, so this is not for, this is telling that this is my previous journey, like how actually I started into editing. Okay. Now, that time I get to know about fonts, colors, basic thing, like what are these things, what font I can use. Okay, then I shifted into, because you know what, I was thinking, let's create some thumbnails.
Okay. for new channel. For I was thinking about creating a new channel. Let's try something different. Let's try something in a new niche. So I was looking for new thumbnails. So I was actually going on YouTube and I have seen a lot of thumbnails here. So like this, and like this. So I actually zoom in so I can understand more ki okay. So ये thumbnail है, ठीक है? तो अब मैं इसको समझने की कोशिश करता था कि लाइक ओके ये कैसे बनाया, और इस पे अगर ये व्यूज आ रहे हैं ना, ये 114 के जो है 1,14,000 जो व्यूज है. What does 61 VPH? What does that mean? 618 views per hour. That is the speed of getting views. Damn, how are you getting this metric though? It is actually an extension, man. It is vidIQ extension, I guess. Yeah. It is actually Wait, Abhi and you've got like 4,500 views per hour? Insane. It is not me. Okay. He is actually getting. I'm not getting that. Okay. Okay, let me explain. Okay. Okay, so किसके thumbnail का example है? इसका ले लेंगे. Okay, इसका ले लेते हैं. Mr. Beast का देख लेंगे. Okay, so ये रेयान तेहरान है जो भी बंदा है ये, ठीक है? He used to. So ये काफी वो है. He actually, he actually cracked the algorithm of YouTube. What do you mean by cracking the algorithm? Because he actually created a video like this, which we were running, and in between he told ki there is something surprise into the last, and that surprise thing actually came into the second video. And the same things from the same pattern actually repeating. नहीं, वो उसका scripting है, पर like how did it help in fact? Yeah, so basically, if you see this thumbnail, okay, so there's a Mr. Beast in it. Yeah. And there's a coin in it. Okay? I think Mr. Beast is the biggest clickbait at this point. Yeah. And why you can understand why they are actually explaining the thing. They are actually on a ground, and they are, that type of, they are actually, lay down on a ground. Okay. So it actually, give an idea of ki they are, they do not have a money, and they are actually, that pointing toward that coin, which is actually mentioned in the, title. That actually validates this thing, this one $0.1. Yeah. नहीं, but still, like, tell me something. ये सब तो सुनने में ठीक ही लगता है. हाँ. What's so special? Yeah. Okay. So, okay, ठीक है, तो आप बात करते. Like, मैं अपने फीड पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, ठीक है? Yeah, go on completely. I want your POV, like what makes a really good thumbnail. So I usually don't see these type of thumbnails, क्योंकि I used to watch the thumbnails only in which I used to click. Okay. Because I used to find, okay, if I am clicking into the thumbnail or that, after watching the title and the thumbnail, if I am clicking it, what is the, what is that, that click, that made you thing. Click. Okay. Yeah. Okay. That what is that hook thing? Which okay, in this screen, what would you click? Pause. Okay. In the screen, what would you click? Okay, let's ask the audience. Guys. What they will click. Like, what do you think is attractive? You can just say number 1, 2, 3, or let's say, is it Flying Beast or the richest man ever, or is it Vivo? Like, what would make you click? The richest man ever, okay? 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5. The richest man ever. Okay. Vivo, richest man ever. I think these are the two things that, yeah, everybody's saying richest man ever. Cool. Let's talk about that, Harsh. What is that Vivo thing? Vivo. Weibo. Yeah, Weibo. Okay. Yeah. Okay. So first of all, okay, let's talk about this. This is a really great channel which actually I used to subscribe and watch the videos of him. Okay. Because he actually have a great production thing. So let me explain about this thumbnail. Okay. So what you actually get. So there is a title which we can see by homepage, because that is the important thing. Whatever we see here, a story of emperors, trillionaires and the richest, and whatever the next thing we actually don't know. And the thumbnail, which is completely simple, nothing into the background, nothing in some, but there is an image which is actually something which is actually hidden, and there is in between a question mark. That question mark which actually give an idea like something is hidden into the video, something which is a mystery, something which is going to get to know. But if we see, there's two things into it, this yellow color and this red color. Yeah. Okay, why this yellow and red color? First of all, these two colors are actually taking our eyes, attention. more focus, that is it. So that red thing
into this, red rectangle should take the attention to the richest and that ever thing. The man thing is obvious. We actually see it by like I take the example of mine. If I I didn't background, I didn't blur my this background, you will surely watch my background of this, where That'll I'm be a little sitting. distracting, correct? Yeah. So you will watch that, curtain and that guitar here and all the thing which is angle. So this is our, subconscious thing. We actually Correct. used to watch it. So if you watch this thumbnail now, you will automatically watch what is actually in this behind of this thumbnail. Like what is in, so basically they actually, give the story that, okay, we are going to get to know about a person or, a group of people who are actually hidden or, they are actually a mystery for us. They are so much rich, the thing. Yeah. Got it. So another question from the audience. Let's say Okay. if we are scrolling, what do we see? Is it the text, caption, or is it the text on the thumbnail? Both. We see What are both. they thinking? Yeah, both. I think I thought it was like, okay, just randomly scroll niche or upar. Huh. So the first thing which I see is images of people. Based upon that, I see. For example, there is every Yeah. TV का thing है ना, उसमें मुझे ये समझ आता है कि like based upon the looks, it's Dubai and it's really good quality compared to let's say looking This. at the right side one. Huh. That's fine. That's a serial, I think. Looking at the right side one, age of 5 lakh to 40 lakh. It's a lot of information. It's a lot of non-clarity that is just put like, it's just like a lot of information that's just like bombarded into this. So when we look at quality, I think it's this one. Avalon ka ye dekhenge. What's her name? I forgot her name. Varun's wife. Yeah. Okay. So there is one thing I wanted to add here. So let's see what views they are getting in. Okay. Yeah. Not just don't see what is the thumbnail. Understand what is the story behind the thumbnail. Okay. Why people are getting so much? Because you know what? I get to see this thumbnail because I in meantime, maybe I've searched this thing, that search related to text like that. So that YouTube is recommending this. Okay. Let me just one thing, let you know that there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. These 8 videos are here. Okay. They all have a thumbnail. They all have a title. And in all, we can see there's a face. Okay. In all, we can see there is a face. Correct. But let's take a little bit toward Ranveer's. Okay. Yeah. He puts the seduction part a lot, using girls, using all of that. Do you think so? Yeah. Just like a common practice. There's a big text girls here. So first your attention will be going toward the girl and that toward the text, not toward first on Ranveer. Okay. Because we know it, because our subconscious mind see the logo of it. That is, that is our subconscious behavior. Before, checking that thumbnail, our mind actually check whose channel is this. Kiska channel hai ye? I actually see this thumbnail and my mind actually take the attention toward this logo. Okay, ye hai. Acha, ye wo hai. How you can understood ye Varun Maya ki wife hai? Randomly you are seeing and you get, okay, this is Varun Maya. This is small image, but I get what? This is Varun Maya's wife. Okay, there's a Nishant here. Okay, Nishant Chahar. Okay. So we see there's a lot of, elements are bombarded. Correct. For a lot of people, this thumbnail is bad. For a lot of people, this is bad. Okay. But see the views he is getting. 42,000 views in one day. Yeah. Okay. That is the thing. I'm not, thumbnail is just, people are talking about ki, okay, thumbnail bahut acha hona chahiye hota hai. I have seen people jinka thumbnail bahut shit hota hai. They are like, they haven't put the text correctly. Show me the shittiest thumbnail you ever seen. I didn't remember, but I have seen. Like people are taking advantage of the time. Okay, tell me something. Like, does design and thumbnail psychology, like human psychology, do they go hand in hand? Yeah. You have to understand, because you know what? Because robots will not going to see the thumbnail. People will go to see it.
So we have to take care of the people's attention. Okay, what people Okay. will going to think about this. Like recently I have created a thumbnail about Ranveer's, and there I put something, a copy in it, and that was actually not, that not correct for the audience. And I understand the thing. Okay, so all the things should be matters. Okay, let me take example of this. Okay. Varun Bajaj, Vivek Bajaj. Vivek Bajaj. Okay, take the example of this. Okay, so after watching this, we actually get an idea. Okay, ये तो podcast होगा. Why it is? That waveform. Bus, that is the thing. Human will see it. You will automatically get understand. Okay, ये था podcast होगा. Okay, and let's see this. When This we is a very good channel, guys. Like, if you haven't seen this channel yet, you should definitely go subscribe, because Varun is doing some really, really interesting stuff. Definitely go listen. It's called AEVY. AV. do you know this thumbnail is recently updated? Is it? They have something different thumbnail behind. Yeah, I have seen this video earlier. So yeah, let me explain the human psychology behind this thumbnail. Okay, there is a lot of tech paisa in the background, which actually take our attention. Okay, paisa, something, and then the above text, the ugly truth about Amazon India, which is validated by this Jeff Bezos photo, and that ugly word is validated by this, Hans. Yeah, that actually clears everything. But all the thing which is required, which is called audience attention. Do audience actually interested in it or not? But this is actually a short video, I guess. This is Harsh, I have something very interesting for you. Yeah. How about I give you the chance? You know that this video is going live on YouTube at the moment, right? How about you make the craziest thumbnail possible for this video? Go ahead. We have 10 minutes. Let's see if you can make something interesting, guys. Shall we do this? Shall we do this? Can I see a yes in the chat? Fast, guys. At least be responsive for this, guys. Like, at least. All right. Yeah, cool. Let's see the ROI that we're gonna get. I mean, until now, I think the content and the discussion that we've been having is very raw and very good. In fact, I honestly loved it. But let's see if you can really play the thumbnail game now. For the very discussion that we had, this video is gonna go on Bluelearn's YouTube channel. Okay. Make a thumbnail under 10 minutes. Let's see. I'm not going to make a really thumbnail, but I will tell you the process, because it actually takes me a little bit time. So okay, TK. At least, like, can you make on Canva or use a? Nah, I am not going to use Canva, man. This is shit. Okay. Let's use FigJam. Let's use FigJam. You give me the rough draft how the thumbnail is gonna look like. Okay. Let me understand what will actually content we are going to get from. TK. I'll read it out. For years, Amazon has been playing. It was a little fast. Okay, if you want what exactly in that video happens, I can tell you. So basically, she talks about Amazon being brutal. So we all think about the great, who's the Infosys person? Who is the founder of Infosys? That's Satyamurthy. Yeah. Narayan Murthy, correct. So we all think about Narayan Murthy being really, really good, right? He's been doing great. He has done like some awesome stuff, right? But there is, when you open Amazon, we'll do it live. Open Amazon, Harsh, open Amazon. Okay. In another tab. Yeah. Amazon India. This is like, will be really interesting if you aren't aware about this. Narayan Murthy. Okay. Amazon. Okay. And go for, just search for desk laptop, bed tables. Yeah. Go ahead. So, can you, one sec. Sponsor thing. Yeah. Sponsored, like 1, 2, 3 positions are sponsored, right? Scroll up. Okay. Now open the one with 22,383 like views, 4 out of 5. Yeah. Press on that. In which? One sec. Thoda scroll karo niche. So I'll tell you the story, guys. Like, you can find this Amazon choice, right? Meme HO. So that is the original seller. Okay. Thoda or scroll karo niche. Keep scrolling.
Wait, Amazon has its very exact. Okay, I think it's See under this? the name of. No, it looks exactly the same. Totally the same. Okay, just scroll up. Look at position 1 and 2. This thing, Amazon Basics, they actually created a Yeah, company. Amazon Basics also had the very same product. So that is what the thing is like. When they see a product that's going really well, what they do is either copy, either go and completely uh, like duplicate the product and then they sell it. So that's being done by two sellers. One is Cloudtail India. Cloudtail is basically run by Narayan Murthy. And guess what? There was this huge FDI law saying that Amazon can't make any businesses in India. Like they can't run their own manufacturing process. But there is another company called Cloudtail, and there's another company as well. There are three companies that they talk in that video, but definitely watch that. Anyway, someone is asking, okay, Harsh, you have this task. You have to make a thumbnail for this video, for this YouTube video. Okay, let me check some photos of Lucifer. Okay, why Lucifer? Because he have some poses like that, you know, evil. Let me check some. Okay. What about Lucifer? Because in that, you know, you're not crazy. That Devil's Face. Okay. Not this. I need something more. Yeah. Okay. Something like this. Okay, koi nahi. That's okay. Okay, koi nahi. People are asking you, process ही बता दो यार. हाँ तो वही तो बता रहा था. तुम कह रहे हो पूरा बना के दिखाओ मेरे को. It actually takes an hour, buddy. You know, Okay. I have to, you know, watch the complete video, Okay. understand what is the story behind it, and then I have to create, you know, that thing कि okay, background create करना है, then you know. Yeah. Okay, तो मैं प्रोसेस समझाता हूँ. Like कैसे इसके थंबनेल बनाने का प्रोसेस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दो ध्यान से देखना इसके इनके रील में. ठीक है, मैं एकदम आराम से पॉइंट कवर करता हूँ. ठीक है. What is the one thing इस पूरे थंबनेल में चल रहा है? मैं बताऊं. पैसा. This पैसा thing, this image, and the same image is used into the thumbnail. Correct. Do you think उनको मेहनत करनी पड़ी इसको बनाने का? That thing उन्होंने पहले ही बना दिया in the video editing thing. कि उन्होंने जेफ बेजोस की यहाँ से ये इसका मैंने क्या किया कि ऐसे मैं लिया एक स्क्रीनशॉट and then created a thumbnail, you know, by using that. Okay, let me explain by Abhi and News thumbnail. Okay, because I have seen their thumbnails and they actually looks good. Yeah. Okay. So this is the thumbnail. Okay, the first process before creating the thumbnail, first thing is expression. If you are working for anyone or you are creating yourselves, you know, your YouTube videos thumbnail, first thing is expression. This thumbnail, you see the same pattern, that red thing. Correct. That crime, that question mark. If you want to highlight something which is a questionable thing, which is offensive thing, just use the red color, that shiny red. If you want to show murder related thing, use a dark red, like how the big brain को use. If you see the, let me show you. Okay, इसको मैं बैकग्राउंड में ऑन करता हूँ, इनका थंबनेल में डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं खोलता हूँ that channel. Okay, big brain को. Yeah. You know what? They use the red dark shade. Okay, these dark shade. If you want to create a deadliest thumbnail where you are going to talk about death, just use the dark red. That actually going to show everything. Because I have created a video of, you know, death of Ankur Warikoo. But I will not going to show you because this is really, you know, that is Ankur Warikoo CEO me a case. क्योंकि ये क्या कर रहा है तू मेरे ऊपर है, something like that. तो I created a, you know, like कि okay, तो मेरे को something ऐसा कुछ create करना था. Okay, let's see this thumbnail. Okay, because Burari case is a really interesting case because everybody know about it, and this was a really mysterious case. Okay, see the background. Don't see the pictures on it. See the background. There is a dark red which actually give the indication of blood. And then all the people who are dead, just use the thing called, you know, that thing which actually hide the eyes. That automatically give the idea, okay, we are going to talk about death. And
if you are just taking the main image picture, make sure कि वो ग्रे स्केल में हो. देखो यहाँ पे ग्रे स्केल है. एंड सिर्फ इसका ही नहीं, सी एवरीबडी. देखो इसमें भी डेथ की बात की, ग्रे स्केल कर दिया. जहां भी आप डेथ की बात करोगे, मेक श्योर आप उसे ग्रे स्केल कर दो. देखो बिल्कुल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी. जहां पे आप बात करोगे समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग क्रिमिनल ऑफेंस, जस्ट यूज द डार्क रेड विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट ब्लड, and use the photos Grayscale. that grayscale thing. How easily you can understand, but something more into it, and that is facial expression. We can use also smiling face into it, but we want to show the cult related thing, so we use a face which actually show the expression. See, this woman is actually seeing like this, okay, shocked angry, okay, something bad is actually happening. See this woman's expression, and see the Osho's face, okay, seeing you like this, okay, हमने क्या किया, मैं ही तो कर something like that. And there is a subconscious thing which is you can see in the background of this thumbnail. There are some girls. See, if you can't Yeah, there are some girls. Just understand the psychology of that thumbnail designer, why he actually put that images which is not clearly visible if we if we see like this. But why? Because we are not going to watch by our naked eyes. Our subconscious mind will see it. We are not going to see it. Our subconscious mind will see it, and that actually create a new story. See this image, okay? See this image. There is a woman जिसे चाकू नहीं पकड़ा है, but हमने चाकू ऐड कर दिया, इस पे ब्लड लगा हुआ है. एंड बिकॉज ये वुमेन, इसका मर्डर, इस वुमेन का मर्डर नहीं हुआ है, तो हमने इसको ग्रे स्केल भी नहीं किया है. दैट गिव द क्लियर इंडिकेशन कि ये मर्डर हो सकती है. अभी हमें क्लियर नहीं है कोई चीज, बट हमें हो रहा है कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमें हो रही है. बट सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ दिस वुमन. इफ यू सी इट, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, सस्पिशियस लग रहा है थोड़ा. वी कैन सी ओके, थोड़ा सस्पिशियस है. एंड देन दिस नाइफ प्ले द कंप्लीट गेम. एंड देन the text, yellow colored killed, and then her lover, jispe they try to create the blood stain. See, if you can see it, they try to create a blood stain, that effect on lover. So the text. that is a okay. Let me explain why they have used this type of images, okay, that outside tongue. So there is a culture inside international thing, that people used to create photos like that putting their tongue out to show their royalty. The people who think they are over cool, they used to click photos like taking their tongue out. So if you know about it, if you have seen some international web series like Elite and that Money is thing, you will see they are actually taken this type of photos. Let's see. 25,000 crore thing. First of all, the first thing which actually see my mind, which see it, that money, that Bitcoin thing, and that text thing, money thing, and then scam. And they are, posing like a cool people. Yeah. So it actually give the complete idea. They are scammer, and they actually, taken the money and go away, run away, that thing. So this is what you have to understand before, creating thumbnail. Okay. So see this image. Are startup worth it? Why I'm explaining this? Because this person, the person who created this thumbnail is actually, I can say he's India's #1 thumbnail designer, and he actually worked with Varun Maya and every big YouTuber he's working with. I'm not going to take his name, but I know him. Which channel is this? So let's understand what is that, I used to study this thumbnail. That's why I'm telling you everything, like what I used to study in this. We all can see that Zomato thing, that Swiggy thing, that Cred thing, startup thing, face thing. But why? Why they have put this one here? We can use something different, na? But why this? Okay, some people will tell that, okay, itna sara blank space छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. But understand the psychology. यहाँ पे हम text पे वो भी कर सकते हैं. Some people told me, okay, हम यहाँ पे text में gap भी दे सकते थे. But understand कि उतने पे ही work करा. We can change some, you can try something different. But अगर ये वर्क कर रहा है तो why we should change? Okay, there's one person और जिसका मैं खुद सेल्फ फैन हूँ, ठीक है, जिसके मैं खुद वीडियोस देखता हूँ. That person is Nicholas Crystal, and I know कि a lot of people know about him. Maybe they know about him. And
He is such a great. Okay, so his one video went viral because of the thumbnail. He gained this much subscriber because of that one thumbnail. And you know what? He's actually creating same time of videos. That's why it becomes little easy to get so much subscriber. So there's a video called Dopamine Detox. And I believe, Oh yeah, I've seen this. I believe you all have seen this thumbnail on your YouTube feed. Everyone, I can guarantee. And you know what? When I clicked on this thumbnail, I got the man. This is great. If after this session, go and watch this video. I will say you will get hooked for 2 minutes. You will get hooked, man. You will get hooked. Okay, let me talk about why. So first of all, let's try to understand what the mindset he have used creating this thumbnail. So he is a great person. He actually know how to create, thumbnails and all. So let's see. There is a laptop here. Yeah. There's an apple here, half eaten apple, and he's actually, that book लेके पढ़ रहा है, ठीक है? तो something मेरे को लग रहा है कि ठीक है भाई, ये काम भी कर रहा होगा, देखो उसमें कुछ चल रहा है, ठीक है, लैपटॉप में. तो ये बंदा है मेरी तरह, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेट लिए भाई, तो रेस्ट कर रहे हैं. उसमें देख भी रहे क्या करना है. एंड देन एप्पल भी खा के छोड़ा होगा, मतलब काम सारे चल रहे हैं, ठीक है. मेरे पास अभी खाना भी रखा होगा इधर, क्या पता इधर, ठीक है. तो सारी चीजें हो सकती हैं. बट देयर इज सेकंड फेस हियर. इसमें एक बंदा अंधेरे में फोन चला रहा है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन करते हैं. A lot of people do this कि रात में they are using phone, light बंद है, they are using phone, and a lot of people used to eat snacks, play games, and these things give up dopamine. These all things gives us what? Dopamine. And this is not, that's a new thing for us. We all know कि dopamine किससे किससे मिलता है. We all know. तो इसको देखते ही मुझे वो वैलिडेशन मिल गया. ओके, फोन चला रहा है, डिटॉक्स डोपामिन हो गया. बट there is second term which is detox. I don't know it is visible or not, but ये दिखता है YouTube पे, ठीक है. If you watch it on main screen तो ये दिखता है. तो detox mean you are not going to take that dopamine thing. So what we are doing something productive. तो यहाँ पे एक बंदा sad हो गया है क्योंकि वो उस dopamine से addict हो चुका है, and then उसने वो detox करके ठीक हो गया. बट अभी देखो, ये thumbnail तुमने देख लिया ना. अब मैं इसका जस्ट एक रेप्लिकेटेड थंबनेल दिखाता हूं. जस्ट कॉपी, इसका जस्ट कॉपी दिखाऊं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो अली अब्दाल? अली अब्दाल. So this guy used the same way, same technique, same tactic in his own video. See this. No text, nothing icon. There's no icon, no filter, just 2 photo. And, they have edited so much, that, fine, that you can understand this thing. See, half photo is much, that thing, that normal thing. And the second photo is full of that, full of thing कि ये सारी चीजें हो गई है, that all. Harsh, we have one thing left. Okay, ask. Tell me the process of, let's say, if you want to make a thumbnail of this video, how would you make it? You can just sketch it on any app or something, like rough draft. Okay. What really makes people click on this? Okay. So देखो, first thing first, before I'm going to draw anything, before I'm going to tell you anything, there is no 100% shortcut of learning thumbnail thing. Yeah. No shortcut. You have to study thumbnail. For creating a good thumbnail, you have to study thumbnail. Like how I have explained you have to develop that design thinking thing. कि you have to okay कि मुझे इसको समझना है अब थंबनेल को. इस वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया. एक एक्सटेंशन है, मैं सबको बता देता हूँ जो इंटरेस्टेड हो. there is a person called Jay Alto, and उसका थंबनेल है Jay Alto YouTube thumbnail extension. इसमें क्या होता है कि you actually get an extension और तुम उसे डायरेक्टली थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो वीडियो का. वीडियो पे क्लिक किया एंड थंबनेल डाउनलोड कर लिया, ऐसा. एंड नथिंग, नो एड वर्ड और कोई समथिंग नहीं, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं, सब फ्री, मस्त. ओके, तो यू हैव टू तो देखो अभी मुझे इनके थंबनेल को स्टडी करना है ना, तो आई विल गो एंड देखो ये एक्सटेंशन है, मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया एंड ये अभी जस्ट डाउनलोड हो जाएगा एंड मेरा काम हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये इमेज खोलनी है, इसको जूम करके स्टडी करना. ओके, क्या ऐसा था इसमें,
क्या मैं इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग, ओके। तुम खुद को कभी परफेक्ट नहीं कह सकते। इंडिया का टॉप थंबनेल डिजाइनर होगा ना, वो भी इंप्रूव करेगा, देखना। मैं यहाँ पे इंप्रूव करने की चीज पे आता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट भूमन बाम? कि मेरे को चैट दिख नहीं रहा, मेरे को देखना पड़ेगा। Yeah, people are saying that they know. Wait. Okay. Seriously, nobody knows Bhuvan Bam? Okay, just put number one if you know. I mean, honestly, everybody knows him. Okay, so go and check out all the previous videos of Bhuman Bam. Go and Yeah. check it out. You will see every thumbnail is now updated. They are trying to update every old thumbnail. Every old thumbnail. You know why? Because they know कि पुरानी वीडियो भी YouTube के फीड पे आएगी। जो मेरी पुरानी वीडियो जो मेरी अभी की वीडियो देख के जाएगा, they will see my old video. उनके फीड पे आएगा। But they update the thumbnail. Okay, let me show you so that you get more understanding. That's okay. We are deviating from the process. हाँ, मैं बताता हूँ। अरे बहुत इजी होता है, मैं बता रहा हूँ ना। It's thumbnail making process is really easy. But you have to, the thing is that ना कि you for make, देखो, let's see this thumbnail. Okay, let's see this thumbnail. Okay, if I am going to make this thumbnail, I will try to more add कि गाड़ी का आइकन ऐड कर दिया, वो कर दिया। But see the thumbnail, कितना क्लेवरली बनाया गया। एक तो कोने में एक तो आइकन लगा दिया भूमन बाम का, जो उसके चैनल का है, एंड देन ऑटोमेटिक गाड़ी, बस कहानी खत्म। नथिंग नहीं, देखो, नॉट यू कैन सी कि उसके चश्मे में गाड़ी दिख रही है। ओके, नथिंग, बिकॉज वी नो दिस इज भूमन बाम। वी हैव दैट कनेक्ट कि ओके कॉमेडी वीडियो होगा, तो वी विल क्लिक इट। सो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है, ठीक है। आपका ऑडियंस का कनेक्ट भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। बट लेट्स वी टॉक अबाउट कि कैसे थंबनेल काम करता है। ओके, तो आई थिंक कि मेरे को फिग्मा पे लॉगिन करना पड़ेगा, बट या लेट मी चेक। ओके, लॉगिन करना पड़ेगा, आई गेस। कंटिन्यू विद गूगल एंड दिस थिंग। So someone in the chat has been saying that YouTube doesn't support, let's say, changing thumbnails. नो, ओ What's your take on भाई, that? व्हाट यू आर सेइंग मैन, मैंने अभी जस्ट अपडेट किया, जाके मेरे चैनल पे देखो, व्यूज बढ़ गए। ऐसा होता है भाई। मैं आई हैव सीन पीपल जिन्होंने थंबनेल अपडेट करके व्यूज बढ़ाए हैं। मैं जो स्टॉक में काम करता हूँ ना, मैं उनके 3-3 साल पुराने थंबनेल अपडेट कर रहा हूँ भाई। मेरे को रोज री इंडेक्सिंग करना होता है। आई हैव टू अपडेट थंबनेल डेली। डोंट टेल कि YouTube नेवर सपोर्ट। YouTube सपोर्ट करता है दिस देखो, बिकॉज YouTube इज वर्किंग ऑन पब्लिक्स रिएक्शन। अगर पब्लिक के सामने वो थंबनेल आ रही है, पब्लिक के सामने अगर वीडियो आ रही है, इफ पब्लिक इज क्लिकिंग, इफ ऑडियंस इज वाचिंग, तो वो वीडियो आगे बढ़ जाएगी। यू कैन नॉट से, पता है, अ लॉट ऑफ पीपल, तुमने कई सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी यूट्यूबर्स की, दे आर टेलिंग कि उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी थी, 1 महीने बाद उनकी वीडियो वायरल हुई। तो डोंट टेल कि ऐसा होता है वैसा होता है। Rule exception are always there. Okay, so there's no team. Let's see. Wow, start for free. Okay, let's go to new FigJam file. Okay, let me take a shape. Okay. Oh shit. इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, या ओके, गॉट इट। एंड इसके बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर लेता हूँ, दैट इज माय प्रेफर्ड कलर। सो या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माय फर्स्ट प्रोसेस विल बी, so the first process of before creating any thumbnail, your first task will be watch the complete video. Okay, whatever the thumbnail you are going to create, first watch the video, understand what you are going to give your audience. This is what the basic thing required, and take that one thing, because I am making for Joe Stock, I take that one thing which actually take the audience hook. Let's see, I am creating a video जिसमें I am going to talk about कि how actually I used cold email to get responses from big people. So I will create a thumbnail जिसमें let's say कि okay, I use okay, so I will use a my image here, something like this, and it will be like shock, क्योंकि मैंने ऐसा ही बनाया, तो I will see कि ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे एक मेरी एक इमेज हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। ओके, तो इट्स अपॉन यू कि तुम कैसी इमेज यहाँ पे लगा रहे हो, बट मेक श्योर फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं।
तो ये इमेज हो गई। एंड देन इसका बैकग्राउंड यू हैव टू ठीक कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होने वाला है। लेट्स से कि अगर मैं बात कर रहा था कि अभी मैंने बोला कि मैं ईमेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि ईमेल हाउ एक्चुअली रीच आउट टू पीपल कोल्ड ईमेल। तो आई विल यूज कि जो एक तगड़ा अप्रोच ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक जीमेल का एक स्क्रीनशॉट लगा दूं जूम करके, जो कि मैंने किया जो कि मैंने किया है, क्योंकि जो मैं किया हूं मैं उससे ज्यादा बेटर समझा सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्योंकि अब कुछ मेरे को नया सोचना पड़ेगा। लेट्स सी कि इस टॉक का थंबनेल हमें बनाना है। ओके, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ना चंदन कि अगर हम इस टॉक से रिलेटेड थंबनेल की बात करें। Yes, absolutely. ओके, सो ओके, लेट्स से कि ब्लूलर्न वालों ने मेरे को हायर कर लिया एंड दे गिव मी अ टास्क टू मेक अ थंबनेल ऑफ माइन। तो ऐसा मेरे को जो स्टॉक वालों ने कहा है कि एक दिन तुम आओगे तुम खुद के लिए थंबनेल बना लेना तो या, so this is me. Okay, let's suppose this is me. Here it is Chandan, because Chandan is a celebrity thing, तो उसकी वजह से थोड़े ज्यादा व्यूज आएंगे, मुझे कौन जानता है तो हमने यहाँ चंदन लगा लिया। एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू यूज एक YouTube का बैकग्राउंड, जिसमें YouTube के थंबनेल्स दिख रहे होंगे। ओके, मे बी वी कैन यूज अ टिल्टेड इमेज, तो मेरे को टिल्टेड थोड़े सही लगते हैं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड नॉट टिल्टेड तो नॉट, कोई जरूरत नहीं। एंड देन एक YouTube का लोगो। ओके, अगर हम ट्राई कर सकते तो हम एक YouTube का लोगो ऐड करेंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट वी कैन से ड्रॉप आउट थंबनेल डिजाइनर, समथिंग लाइक दैट, और वी कैन से millionaire thumbnail designer for making more clicky, or if I am millionaire so you can use that but I am not, so you cannot use that. Okay, so yeah, so there is a text, like you can add a text like in this pattern here, or you can create something like this कि अगर हम चंदन साथ में अगर फोटो खिंचा लेते, तो अगर हमें ऐसा चांस मिलता तो आई यूज अ बिग फोटो ऑफ माइन जो थोड़ी प्रोफेशनल होती, एंड यहाँ पे मैं और चंदन की एक साथ में खड़े होके फोटो होती, एंड देन यहाँ पे मैं एक ऐसे ओवरले ऐड करता जैसे तुमने रणवीर के वीडियोस में काफी ज्यादा देखा होगा। वो यहाँ पे यूट्यूब की फीड में की मैंने ओपेसिटी कम करके लगा दी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यूट्यूब के फीड की इमेज। ठीक है, यूट्यूब का यहाँ पे हमने जो यूट्यूब का फीड होता है जिसमें थंबनेल्स दिखते हैं वो थंबनेल लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया जेई ड्रॉप आउट थंबनेल डिजाइनर, और यू कैन से वट एवर जो स्टॉक्स थंबनेल डिजाइनर, और यू कैन से बिग माइंड बिहाइंड बिग यू कैन से अ माइंड बिहाइंड Millions of views. हाँ, millions of views, yeah, you can say that. So these Okay, are the Harsh, just a question. So, is your job also coming up with the text? no, like moreover you can say yes, but a lot of time they used to give me copy thing. Correct, okay, correct, so yeah. they देखो तो what is the process, like moreover जो मेरे को मिलता है, like अब तो उन्होंने मेरे को कर दिया है कि ठीक है हर्ष, आपका स्टार्टिंग का फेज अब कंप्लीट हो चुका है, यू आर नाउ अंडरस्टैंड अवर कल्चर कि कैसे काम करता है, तो यू कैन नाउ से कि ओके अब हर्ष आप एक्सपेरिमेंट करो, ये वाला थिंग अभी लिटर चल रहा है। तो आई एम यूजिंग माई ओन स्किल्स एंड आई एम ट्राइंग टू improve thumbnails, new thing. So I think there was someone who is trying to what requesting thing. So what I do, I decline it. Got it. I think it's pretty good, in fact. Okay. Anything else to this? Yeah. So first of all, so they usually give me a text and they say me कि हर्ष ये टेक्स्ट है, ये वीडियो का लिंक है, now this is your turn. ये कॉपी है जो थंबनेल पे आनी है, ये YouTube का लिंक है जिससे हमने टेक्स्ट ये टॉपिक उठा रखा है, अब नाउ ये तुम्हारा चांस है कि भाई जाओ ढूंढो जो तुम कर सकते हो। तो व्हाट इज द माय फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रीडिंग दैट टेक्स्ट कि अच्छा वो टेक्स्ट से मुझे एक्सप्रेशन दिखाने क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग की एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। इधर टेक्स्ट इज की मुझे घर वालों ने मार के भगा दिया, मैं थंबनेल डिजाइनर बन गया, तो आई विल ऐड अ इमेज जहां पे मैं सैड हूंगा, इस पूरे टॉक में से आई विल टेक अ इमेज जहां पे मैं सैड हो गया हूंगा एंड उसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, या फिर मेरी अगर कोई ऐसी इमेज अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें घर वाले मेरे को मार के भगा रहे हैं और वीडियो वायरल हो चुकी है, तो मैं उस वीडियो को उठा के यहाँ पे उसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अंडरस्टूड दिस थिंग कि वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए थंबनेल में। ओके, इफ यू टॉक अबाउट कि यार ये बंदा जो है इसने समथिंग कि ये गरीब से अमीर बना है, लाइक अभी क्रेजी XYZ का था जो स्टॉक पे आया था, तो व्हाट वी हैव टू डू कि
दे आर डूइंग कि ये थिंक कि एक हमने वीडियो उठाई इसमें ही इज कि जब वो पहले था कैसा है ना, कि उसके पास कुछ नहीं था, एंड नाउ कि उसके पास इतने सारे मतलब चीजें हैं। तो वी टुक दैट 2 images and that was completely experimental, you know. We are, देखो, for making thumbnails we have to understand one thing कि हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, we have to try that experiment thing, वरना you will not make it clicky. See anyone's thumbnail, किसी का भी thumbnail जो जाके देख लो, they all are trying something different, but there is a catch, there is a catch. What is that? Brand value. Why I'm talking about brand value? Go and watch the thumbnail of Ankur Warikoo. Every thumbnail have that green background, and the older video have that blue background, and now he's updating, his new thumbnail designers are updating the thumbnails into green, and you can see jitne purane thumbnails hai na, they are updating into green slowly and slowly, but they are updating. Okay, so this is a thing कि कुछ लोगों को ब्रांड चाहिए होता है, दे आर फॉलोइंग द ब्रांड थिंग कि अच्छा टेक्स्ट जो ऐसे होंगे, लेट्स सी, तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर बेटर यू नो एक्सप्लेनेशन थिंग. अंकुर वारिकू, एंड इफ यू सी हिज थंबनेल तो तुमको समझ में आ जाएगा भाई, यू विल डायरेक्टली गेट अंडरस्टैंड. देखो, सी, दे हैव अ ब्रांड कलर, दे हैव अ ब्रांड थिंग. ओके, कि देखो अगर हमें टेक्स्ट के पीछे रेक्टेंगल लगाना है तो ऐसा लगेगा, समझ लो ना. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इफ यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग, कि अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करें तो ठीक है, लेकिन ये जो ये है ना रेक्टेंगल वाला थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड थिंग. व्हाट इज द ब्रांड थिंग? अंकुर वारिकू की सेल्फ की फोटो. अगर पता है कोई बंदा क्लेवरली कॉपी कर लिया ना इसके थंबनेल को, एंड ही अपलोड अ वीडियो इन द फेस ऑफ अंकुर वारिकू, लोग दे आर नॉट गोइंग टू जज, दे विल क्लिक डायरेक्टली, ये तो अंकुर वारिकू का वीडियो है. This is what the power of brand. And see see the, you know, the older thumbnails, these blue thumbnails, all have the same color, same background, but see, all have the facial expression. Every thumbnail have the facial expression, because that facial expression is important, because this is will going to, you know, explain people that okay, this is important. So you have to understand, you know, this is the all the process which we have to follow before creating a thumbnail, before, you know, heading toward the thumbnail. First understand what is into the video में क्या है content, क्योंकि you are not going to make a clickbait thumbnail. Okay, you are not going to, you know, you have to make a thumbnail which is clicky, जिससे कि यार लोगों को समझ में आके, क्योंकि इस थंबनेल को देखने के बाद मुझे आइडिया आना चाहिए कि मुझे इस वीडियो में क्या मिलने वाला है. अब ऐसा हो गया कि अब अंकुर वारिकू ने यहाँ पे लिख दिया करोड़ों रुपए कमा लो, मैं वीडियो पे क्लिक किया कॉफी का इन्वेस्टिंग बता रहे हैं, तो वो क्लिकबेट हो गया ना. समथिंग लाइक दिस, लो रिस्क हाई रिटर्न, सिंपल वर्ड में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या बात करने वाले, क्योंकि पूरी वीडियो में वो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग करेंगे, तो पहले ही क्लियर कर दिया ओके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड सम पीपल विल टॉक कि ओके थोड़ा सा देखो इनके थंबनेल्स में तुम अगर देखोगे ना, तो दे आर नॉट फॉलोइंग कि अच्छा ये टेक्स्ट बहुत ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, ठीक है, इस इमेज के ऊपर आ जा रहा है. सी, ये टेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा रैंडम लग रहा है ना कि लाइक उन्होंने ऐसा टिल्टेड करके लगा दिया, बट इट हैज द इम्पैक्ट. व्हाट इट एक्चुअली बिल्ड द ट्रस्ट कि अच्छा ये अंकुर वारिकू की ही वीडियो है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो इन एवरी थंबनेल उन्होंने टिल्टेड करके ही रखा है. देखो ये चीज यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एंड ये मुझे डायरेक्टली समझ में नहीं आया. आई हैव ट्राइड माई, यू नो, आई हैव यूज माई, यू नो, दैट 1 hour की अच्छा मैं ट्राई बैठ के समझ रहा था ओके ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है. Harsh, तो just a quick heads up. We Yeah. have like, I'll give you a task. This is probably the last thing. 5 minutes to go before we Okay. close the session. Okay. And in these 5 minutes, I want you to go deep dive into Netflix India's thumbnail design. So just break down one interesting thumbnail that you find over there. Maybe Stranger Things का, क्योंकि आज ही release होना हुआ है. Yeah, Netflix India, correct. I don't know. Yeah, let's break down one good thumbnail and yeah, let's close for the session. Okay, let's पहले मैं खुद देख लेता हूँ कि Yeah, मुझे वो नीचे वाला है ना official clip नाम के Stranger Things का. ये Yeah, that's the one. Correct. Okay. So let me try to understand, क्योंकि मुझे ऐसा मूवीज वगैरह का थोड़ा वो नहीं है, ठीक है, तो let me see. Okay, क्योंकि because you know what, Netflix have this own trust of Stranger Things का, तो you know कि कितना ज्यादा क्रेज है, everyone is talking about Stranger Things, तो या तो वो थोड़ा सा रहता है. Okay, let me see. Okay, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं.
Okay. How they make it genuine? Let me some more. Okay. Yeah, I think you can go for a normal content one rather this, because you need to You know know, the story to understand this. let me see. Okay. फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने सारे स्ट्रेंजर थिंग में ऐसा करा हुआ है कि मतलब ये सिर्फ स्पेशल इस थंबनेल के लिए, क्योंकि इट इज एन कि ये वो है, इट इज लाइक ये वेब सीरीज है एंड यू नो व्हाट दे ऑल द वेब सीरीज उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न फॉलो करने होते हैं, तो लेट मी सी कि उन्होंने ऐसा करा हुआ है कि नहीं. ओके हाँ, गॉट इट मैन, गॉट इट. सी वन थिंग आई वांट टू जस्ट पुट हियर, तुम ध्यान से देखो. The deep red and blacks. इन एवरी थंबनेल मोर ओवर जिन्होंने जितने भी थंबनेल्स उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग के बनाए हुए हैं, उन्होंने सेम कहीं ना कहीं इसको यूज करने की कोशिश करी है. करेक्ट. ओके. एंड ये देखो टेक्स्ट का जो ये है फॉन्ट यूज हुआ है. क्यों मैं ये फॉन्ट देखने आया, क्यों ये मैं फॉन्ट देखने आया, लाइक किसी को आइडिया, लाइक मैं चैट से पूछना चाहता हूँ. ठीक है, ये चीज मैं ये फॉन्ट देख के थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ. ठीक है, कि इन्होंने ये क्यों यूज किया, मैंने अभी बोला था ना लाइक. ओके सो लेट मी टेल कि अच्छा मुझे ये टेक्स्ट सस्पिशियस क्यों लगा. ये ऑफिशियल ट्रेलर का लोगो सेम फॉन्ट. ओके तो मैं बताता हूं मुझे सस्पिशियस क्यों लगा एक्चुअली में ये, बिकॉज ओके सी दिस, ये थंबनेल देखो एंड ये थंबनेल देखो, सी द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे ये जो फॉन्ट यूज हो रहा है ये मॉन्स्टर आर्ट है, आई गेस. ओके मुझे ऐसा क्लियर नहीं है, लाइक मुझे लग रहा है कि ये मॉन्स्टर आर्ट फॉन्ट है. तो सी कि यहाँ Okay, पे जो people are फॉन्ट, asking you to look at the yellow one scroll out, one zoom out. ये LMKIH, which one are you talking about? LN. What's the big news? I mean, someone in the chat. Yeah, yellow one का मतलब क्या? Which one? I think this one. Okay. I think this one. The big news. We have good news. Is that the one? Okay. Okay. Cool. That's the one. Yeah. Okay. So let That's me the tell last you. one. That's the last one we're gonna do for this. Okay. Cool. Let me explain you one thing. Okay, one thing. It's more over experiment to the Netflix channel. अगर तुम नेटफ्लिक्स चैनल के पैटर्न को ध्यान से अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दे आर यूजिंग कि वो ऐसे यूज करें. ठीक है, थंबनेल बनाया, ऐसा ऑफिशियल क्लिप लिखा एंड टेक्स्ट लिखा एंड पीछे इमेज लगाई. बट सी दिस, जो भी पैटर्न वो यूज करते हैं उसे जस्ट उन्होंने डिफरेंट करने का कुछ ट्राई किया है. समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी होल थंबनेल. जो भी इनका पैटर्न रहा है थंबनेल बनाने का उसका सबसे डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाई दे गेट द लीस्ट व्यूज 17K. इसके जस्ट बाद की वीडियो 64K गई है एंड और वीडियो 64K एंड ऑल दैट. बट सी दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग जो कि मेरा अटेंशन लेगी वो है इसका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन. बिकॉज टेक्स्ट उतना कैची नहीं बनाया गया. ठीक है, उतना भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि इन सब थंबनेल्स के बीच में ये थोड़ा सा फंस जा रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फंस जा रहा है कि ये सब मेरे को थोड़े से ज्यादा अटेंशन ले रहे हैं मेरे. लेकिन सी यहाँ पे देखने का ट्राई करता, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ. तो सी कि इन्होंने पहली बात तो एक्सपेरिमेंट किया है अपने चैनल पे, जो कि नॉर्मल यूट्यूबर करते हैं, कि हमने कुछ नए तरीके के थंबनेल बनाने का ट्राई करते हैं. ओके सी, जैसा कि मैंने बताया ब्रांड वैल्यू, कि नेटफ्लिक्स का लोगो वहीं जहां पे लगता है वहीं पे लगेगा. ठीक है, हम उसे चेंज नहीं करेंगे, पोजीशनिंग. एंड देन टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट में उन्होंने कुछ नया ट्राई करने का ट्राई किया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल एक्सप्रेशन, व्हाट्स द बिग न्यूज, जो कि टेक्स्ट है और वैलिडेट हो रहा है फेशियल एक्सप्रेशन से. और बिग न्यूज जो कि एक्चुअली में न्यूज़पेपर या टीवी में होना चाहिए, लेकिन हम न्यूज जो है वो फोन में पाते हैं. दैट्स व्हाई फोन दिखाने की कोशिश की गई है. एंड फोन के साथ में these three, that line, if you can see that indication that there is something coming out of it. Yeah. वो ठीक है. But यही है. Shall we go for a few questions? Yeah. Guys, if you have any questions, feel free to raise your hand and I'll unmute you. Okay, ask. And do that. I'm ready. But do it a little quick, no? Like faster. Is that okay? Okay. So Ritik, raise your hand. I think you mentioned that you wanna ask. Okay. So let me, not share my screen or share my Yeah. You can stop sharing the screen. And Ritik, yes. Yeah.
Hi Harsh. Hi Yeah. Kundan. Hello. Can you hear me? Yeah, Yeah, you yeah. are audible. Yeah, nice to hear you, Harsh, and it's an amazing session. Means you literally talk about the mindset required to build a thumbnail. Like, first of all, I wanna ask, like, how to connect with you. On Twitter. Actually, Go find Hey Harshu. Just click the follow button and go to DM. That's can how I you came in That's- contact with him. That's the easy way. But make don't expect a follow back जब तक कि तुम खुद ऐसे कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे जो मुझे इंटरेस्ट दें. Okay. okay, so can you share the link? Just search Heya Harshu. Hey Harshu. Hey Spell it. Heya Heya and Harshu. Okay, okay. And what's your YouTube channel name? Be Harshu. Be Harshu. Okay, so like for thumbnail is a part of graphic designing. So how you study about that? Like I'm studying about color Sources. psychology Okay. and all that. So what you study about it? Like you study about fonts and background. So how you study about it? Okay, so first of all the my approach जैसा कि मैंने कहा कि like मेरा जो approach होता है the basic my approach will be कि first of all जिस वीडियो पे मैंने क्लिक करा है मैंने जिस पे क्लिक किया नॉट एनी कि मैं बस रैंडम देख रहा हूँ अच्छा मेरे को ये यूट्यूबर पता है इसका मैं थंबनेल देखूंगा नहीं द वीडियो विच टुक माई अटेंशन बिकॉज आई एम सीइंग एट अ डिजाइनर ओके कि अच्छा मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि ये वीडियो पे मैंने क्लिक करा है उसके थंबनेल को डाउनलोड करना है एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके ये थंबनेल क्यों बनाया गया इसमें ये फॉन्ट ही क्यों यूज किया गया ये फॉन्ट से क्या ऐसा इंप्रेशन बन रहा है व्हाई ये फेशियल एक्सप्रेशन यूज किया गया है इफ यू आर अ थंबनेल डिजाइनर ना तुम्हें सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा यू नो व्हाट कि अगर तुम थंबनेल डिजाइन कर रहे हो ना तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे दे आर टेलिंग कि व्हाई बैकग्राउंड क्यों नहीं ऐड किया दे आर लाइक थिंग तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड का भी इंपैक्ट होता है टेक्स्ट का भी इंपैक्ट होता है एंड मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया अली अब्दाल का उसमें कोई टेक्स्ट नहीं था तो टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या तुम फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ शो कर पा रहे हो इफ यू कैन शो एवरीथिंग बाय दिस फेशियल एक्सप्रेशन डोंट ऐड टेक्स्ट बट इफ यू कैन ऐड इफ यू कैन यू नो देखो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थंबनेल मेरे खुद के हुए हैं जिसमें मैंने खुद कभी टेक्स्ट नहीं लगाया ठीक है बस मैंने रैंडम मैंने वो थंबनेल बनाया लगाया और वो वायरल हो गई मतलब इस YouTube चैनल पे नहीं वो दूसरा मैं एक चैनल है हे आर्शु नाम से उसपे कोई वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी कि मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दिया वन वीडियो व्हाट गेट वेंट वायरल बट क्योंकि वो मेरे नीश का नहीं था मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है तो नॉट क्रिएटिंग एनी वीडियोस बट या सो या तो टेलिंग यू द थिंग कि कभी कभी थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बट ऑडियंस गेट द पॉइंट ठीक है एक थंबनेल तुमने लगाया मैं बताया ना कि थंबनेल इज नॉट कि हम मान लेते हैं कि थंबनेल बहुत ज्यादा डिजाइन लगता है हमें डिजाइन वो चीज यूज ही नहीं करना होता इफ यू आर गोइंग टू मेक अ थंबनेल तो तुम्हें वो डिजाइन पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना होता कि पोस्टर ऐसे बनाते हैं तो थंबनेल भी ऐसे ही बनाएंगे अलाइनमेंट अगर हम पोस्टर में देखते हैं तो थंबनेल में भी अलाइनमेंट देखेंगे नहीं इफ अगर थंबनेल किसी टेक्स्ट को टेढ़े मेढ़े करके अगर ऐसा बन जा रहा है कि उसे वो यूजर का अटेंशन ले रहा है ऑडियंस का अटेंशन ले रहा है तुम्हारा रिटेंशन बढ़ जा रहा है तो व्हाई नॉट ट्राई दैट ना बस यही मैं कहना चाहता हूँ लाइक Okay, Harsh, thank you for sharing this information. Yeah, man. And it's nice to talk with you. Thank you. Yeah. Okay, and that is the end of this session. Ladies and gentlemen, I hope you all enjoyed this session because, okay, we have another question as well. Okay, one last question. Yeah. Okay, so there is another disclaimer. All the people who are listening this, Zoom call, don't exit it. Just listen this one thing. I know कि तुम्हें थंबनेल डिजाइन से बहुत अभी मजा आ गया होगा ठीक है कोई लीव नहीं करना जस्ट ध्यान से सुनो डोंट अभी चैट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना मुझे अभी ठीक है अभी बहुत जरूरी है कहना इफ यू वांटेड टू बी अ थंबनेल डिजाइनर या कुछ भी ग्राफिक डिजाइनर थंबनेल डिजाइनर वीडियो एडिटर कुछ भी ठीक है इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अ यूट्यूबर इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अ यूट्यूबर आई एम रिपीटिंग दिस थिंग डोंट गो एज अ फैन कि hey Harsh I am your big fan you know what I have watched your all videos and then तुम बता रहे हो क्या this is my work this is my portfolio no don't ever show this हो गए तुम बहुत बड़े फैन don't let them know कि तुम प्रोफेशनल की जगह फैन बंदे हो अगर if you go as a fan तो they take advantage of you they will not going to pay you okay फैन है भाई तू तो फ्री में कर देगा मेरे लिए
तो ये होगा, ये लिटरल होता है, मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े क्रिएटर, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, तुम किसी भैया के फैन होगे बहुत बड़े, मैं भैया का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लिटरल भैया, ये ना जानते होगे तुम सब, बहुत ही फेमस भैया है वो, वी ऑल यूज टू फॉलो हिम, एंड उन्होंने किया है ऐसा, लिटरल, मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं लोगों को जानता हूं, एंड ही लिटरल डू, उन्होंने, भाई लोग उनके फैन बन के जाओ तुम, किसी भी बिग यूट्यूबर की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, एंड मैंने पॉडकास्ट में भी सुने कई सारे, दे आर टॉक, समीर एंड कॉलिन के पॉडकास्ट तुम सुनो, दे आर पीपल टॉक की अगर तुम फैन बन के जाते हो तो तुम्हारा वो ले लिया जाएगा, ठीक है, मजा, दे आर लाइक कि वो तुमसे काम करवा लेंगे, पैसे नहीं देंगे टाइम पे, बी प्रोफेशनल, ठीक है, तुम कितने ही अभी नया सीखना ट्राई किए हो, अगर तुम्हारा, देखो मैं जानता हूं तुम्हें से बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट आया होगा क्योंकि जो स्टॉक में बंदा पहुंच गया, लास्ट ईयर से शुरू करा हुआ है, लेट मी टेल यू वन थिंग, पहले पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें थंबनेल्स बनाने नहीं आ रहे, खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करो, अपने थंबनेल बेटर करो, तब दूसरों के थंबनेल बनाने जाओ, ये मत कहो, ठीक है, ये मत कहो कि यार मैं दूसरों के लिए काम करूंगा तो मुझे पब्लिक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, कि मैं किसी प्रोफेशनल बंदे के लिए काम करूंगा तो मुझे पब्लिक चीज मिलेगी, हाँ मैं तो बड़े बंदे के लिए काम कर, नहीं, वो चीज अपने में तो इंप्लीमेंट करके दिखाओ पहले, तो दिस आई हैव डन इन माय लाइफ, और यही मैं करके, यू नो, आई एम वर्किंग विद मार्केट अप, मैं उनका थंबनेल डिजाइनर हूँ, एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग विद जो स्टॉक्स, तो आप तुम सबको पता ही है जो स्टॉक वाली चीज, एंड मोर ओवर थंबनेल डिजाइनर अगर तुम बनना जा रहे हो, ठीक है, ट्राई टू लर्न, यू नो, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से थंबनेल डिजाइनर मत बनना, क्योंकि इंडिया में, ठीक है, जो थंबनेल डिजाइनर्स होते हैं, या तो तुम अपना वर्क बहुत अच्छा रखो, बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, तब तो तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिलने वाले हैं, नहीं तो भाई इतने खराब पैसे मिलते हैं ना, इतने खराब पैसे, लाइक पीपल पे तक नहीं करते, दे आर लाइक ओके तू तो फैन है मेरा, फ्री में काम कर ले, ऐसा, तो ऐसे भी होते हैं, लाइक क्लाइंट तुमसे काम करा लेगा एंड एट द एंड कह देगा नहीं चाहिए थंबनेल, तो ऐसा होता है इंडिया में, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थंबनेल डिजाइनर ही बनना है, यू वांटेड टू परस्यू थंबनेल डिजाइनर और अ डिजाइनर, go for, you know, that understand that international perspective, how international thumbnails are created, how Ali Abdal का thumbnail कैसे बनता है, how that, you know, Sameer and Collins के thumbnail कैसे बनते हैं, वो लेवल क्रिएट करो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, यू नो, कि तुम किसी यूट्यूबर के साथ काम नहीं करे होगे, क्या पता तुम जो स्टॉक के साथ काम नहीं करे होगे, बट मैं कह सकता हूं कि तुम में से हो सकता है कोई ऐसा बंदा यहाँ पे बैठा होगा जिसकी थंबनेल डिजाइन मुझसे ज्यादा बेटर होगी, समझ रहे हो, मुझसे ज्यादा बेटर, आई हैव सीन द पीपल जिनकी थंबनेल डिजाइन मुझसे ज्यादा बेटर है, बट दे आर रनिंग एरेंड्स, उनके पास काम नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनके पास क्लाइंट नहीं है, उन्हें पता नहीं कैसे अप्रोच करना है, तो वन थिंग, एंड यू नो व्हाट, ट्विटर इज द इजीएस्ट वे टू अप्रोच पीपल, गो एंड कोल्ड ईमेल करो भाई, कोल्ड ईमेल सबसे बेस्ट है, या दिस इज द लास्ट नोट, डोंट ट्राई टू बी अ फैन, ट्राई टू बी प्रोफेशनल, बस एट द, अब आ जाओ चैट पे। Okay. Yeah. Okay, there's one question. I think a lot of people have been waiting for this. हाँ, What's the reality of a thumbnail designer in India? it's worst, How much do they make? really If you are bad. comfortable, you don't need to tell me the exact number. You can tell about what an average market value is like. If you go for international ना, तो you will get $10, but if you work for India ना, तो अगर यूट्यूबर ना दिमागदार होगा, ठीक है, वो उसको पता होगा तुमसे काम कैसे निकलवाना है, तो वो तुम्हें 100 रुपीज देगा एक थंबनेल बनाने का, और कोई कोई 50 रुपए 30 रुपए, बट इफ यू हैव दैट करेज ना कि यू कैन से ओके मेरा वर्क अच्छा है, तो गो फॉर 500, बट गिर पड़ के अगर यू आर, यू नो, यू आर नॉर्मल क्रिएटर, जिनके जैसे संदीप माहेश्वरी जैसे तुम थोड़े बड़े क्रिएटर्स के पास जा रहे हो, लाइक इंडिया के जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, टॉप नॉच क्रिएटर्स हैं, दे विल गोइंग टू पे यू 500, बट इन इंडिया मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, बट इफ यू आर गोइंग फॉर, यू नो, नॉर्मल रेट, यू विल गोइंग टू गेट 300 एंड समटाइम लेस, नॉर्मल you will get 250. Yeah, this is the rate, you know, Okay. normal rate. Correct. Thank you so much, man. Thank you so much, Hitanshu. Wait. 1 second. Wait. Can you turn on your camera because it is showing me a glitch? मेरा Yeah. This point. Okay, cool. Thank you so much, Harsh, and thanks for coming. yeah man, Well, that is Bluelearn session for today. Did you enjoy coming here? yeah man, I was totally nervous, man, you know, before starting this event I was literally कि मैं कैसे बोलूंगा, but yeah, that was really great, and you know, all the people in the chat, they are actually commenting, you know, this was really highly interactive, जितना मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा Zoom में, but it actually happened, मैंने देखा like people are actually interacting, and yeah man, this was really great.
आई होप कि तुम सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि तुम सबको वैल्यू मिला होगा, एंड गो एंड चेक इट ऑन माय प्रोफाइल ऑन ट्विटर एंड okay, yeah, that is great, and I am actually working on something big, so you can go on Twitter and find it. It's okay. So अगर चंदन मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दे तो मैं बोलूं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। You guys can check it on Twitter Okay. on my profile. Absolutely, guys. That should be the hook for you to go and follow him on Twitter. All right. Thank you, ladies and gentlemen. Thanks for coming for today. And Hello, good evening, sir. sorry. Hello, good evening, sir. Sir, I am Yes, Sumit, sir. Okay. Sir, how we can enter in this field means making graphic post like what means template, sir. Okay, it's Okay. fine. If you wanna ask in Hindi, you can go ahead. Yeah. Sir, her, sir. Don't say Harsh, okay? Just call me Harsh. Just call me Harsh. Don't say sir. Okay. Manoj. How we can make an attractive and means user can click graphic post you have guided. Okay, have you watched the whole session? Yes, sir. I have watched. You have guided many things, and I sure what is the one main thing you have understood from the whole session? What is that one point जो तुम्हें लगा कि मैंने बताया और तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा ये पॉइंट होना चाहिए? Sir, that means we need to first observe the whole video, and according to that we need to work on our designs, sir. Can you repeat? Sir, we need to watch the whole video and whole emotions and what the video is going to means interact with a user. मीन्स हमको यूजर के पर्सपेक्टिव से बनाना है कि यूजर को अच्छा लगना चाहिए बहुत ज्यादा। तो आई हैव टेकन अ पॉइंट ना कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग बना कैसे रहे हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट नो कि थंबनेल बनाना कैसा है। दे आर लाइक कि अरे कुछ भी फोटो लगा दिया, कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया और थंबनेल बन गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ मैनर, ठीक है, कि तुम्हें इमेज सही से लगानी होती है। तो इफ यू वॉच द थंबनेल्स, ठीक है, डोंट गो फॉर एनी रैंडम पीपल, जस्ट जिसको तुम मानते हो अपने आइडियल, ठीक है। तुम अगर ईशान शर्मा को अपना आइडियल मानते हो तो जाओ ईशान की थंबनेल देखो। अगर तुम रणवीर इलाहाबादी को अपना आइडियल मानते हो कि अच्छा ये बेस्ट थंबनेल है, ये बेस्ट यूट्यूबर है, उसके थंबनेल देखो। जिसको भी बेस्ट मानते हो अपने हिसाब से उसके थंबनेल देखो, ठीक है। उन सब के थंबनेल जाके स्टडी करो कि अच्छा, क्योंकि देखो उन्होंने जो भी ऑडियंस बिल्ड करा है ना, वो उस थंबनेल टाइटल की वजह से ही बिल्ड करा हुआ है। तो अंडरस्टैंड कि अच्छा थंबनेल बना कैसे रहे हैं बंदे, एंड उसको अपने जो भी टूल यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में इतने सारे टूल है ना, इतने सारे टूल कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम कोई भी टूल यूज करो, कैनवा भी यूज करो, मैं खुद यूज नहीं करता, तुम कर सकते हो, ठीक है। फॉर यू, तुम्हारे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कैनवा से बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाते हैं, बट मैं कैपेबल नहीं हूँ ऐसा बनाने के लिए। तो यार आई यूज फोटोशॉप एंड फिग्मा, तो आई यूज फोटोशॉप। तो या and you can guide sir how we can enter the graphic designing field, sir. it is just create your personal projects first, okay. So first come up with a basic project and then you show this as a leverage thing to logon ko, like, so that you could show others that this is what you worked on. That's all it is. Show your personal projects na first. देखो, what is my process of learning graphic design was, first check out every project जो लोग बना रहे हैं, उसको देख के कॉपी करके अपने से बनाने का ट्राई करो। क्योंकि पहले तो कॉपी करना पड़ेगा ना, क्योंकि आता तो नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट ना, तो फर्स्ट कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करके प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड देन जो तुमने कॉपी कर लिया ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने कंप्लीट कॉपी कर लिया, अब लगाओ अपना दिमाग, ठीक है। फॉन्ट चेंज करो, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह सर्कल लगा के ट्राई करो, कुछ भी नया करने का ट्राई करो उसमें जो बन गया है, और देखो कि तुमको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, एंड अंडरस्टैंड कि यार तुम इसे किसी के लिए बनाते तो क्या उसको अच्छा लगता। और यू कैन टेक फीडबैक, इतना बढ़िया ब्लूलर्न वालों ने बना रखा है डिजाइन के लिए, वहां जाके शेयर कर दो, ठीक है, डायरेक्ट शेयर कर दो एंड आस्क पीपल फॉर फीडबैक। यू नो व्हाट, सब नहीं रिप्लाई करेंगे बट वन पीपल विल रिप्लाई, और वो बोलेगा बंदा ये सही कर दे, और वो फीडबैक को अप्लाई कर, फिर से शेयर कर, फिर सेकंड बंदा रिप्लाई करेगा, एंड यू विल इंप्रूव ग्रेजुअली। ये यार पूरा एक प्रोसेस है, मुझे 1 साल लगा यहाँ पे पहुंचने, ठीक है।
इसमें बहुत कुछ झेला है, ठीक है, घर वालों ने भी Yes, बहुत sir. कुछ बोला है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, तो तुम्हें लगेगा कि देखो ये कंप्लीट प्रोसेस है, और इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर, तो आई विल टेल कि चेक आउट माय ट्विटर, तो उधर कुछ Of तुम्हें course, मिल sir, I सकता am है। interested, sir, in हम्म this freelancing journey, and of course, I am exploring, and I have worked 6 months as a uh, means social media handling, and created some graphic designing post from Canva, and have some experience, but not that much experience that um, can I get client in first time first of impression. लेट मी आस्क यू वन थिंग, Okay. हैव यू एवर शेयर्ड योर वर्क इन क्या दिस ब्लू लर्न के ग्राफिक डिजाइन सेक्शन में? No, कभी of शेयर किया? course, I have not shared. क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट को पसंद आएगा? Yes, जब yes. तक तुम फीडबैक नहीं लोगे। तुम जाके मेरी प्रोफाइल चेक करो, मैं अपने एक भी थंबनेल बनाता हूँ ना, लोगों से फीडबैक मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए परफेक्ट है, बट क्या पता ऑडियंस को ही पसंद नहीं आया, वो ऑडियंस कहते हैं भाई ये तू क्या बना रहा है, ठीक है, मेरे को तो पसंद ही नहीं आया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स Yes, yes. कि उसे ह्यूमन देखने वाले हैं, रोबोट नहीं देखने वाले। तुम ग्राफिक डिजाइन बनाओगे, वो किसी के सोशल मीडिया पे जाएगा, उसको ह्यूमन देखेंगे, ह्यूमन इंटरैक्ट करेंगे। तो टेक द फीडबैक फ्रॉम ह्यूमंस। तो जहां भी मौका मिले शेयर कर दो और आस्क पीपल फॉर फीडबैक, बट पोलाइट मैनर में, ठीक है, ये नहीं कि भाई कहीं भी स्पैम कर दिए, ठीक है, नहीं। ग्राफिक no. डिजाइन का देखो एक सेक्शन बना हुआ है ब्लूलर्न पे, मैंने खुद भाई मैं लोगों को देखता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं लोगों के खुद वर्क देखता हूँ फॉर इंस्पिरेशन। तो तुम ऐसा मत मान के बैठना कि भाई ये तो बंदा ओजी है, इसको सब आता है तो ये कुछ भी कर सकता है, नहीं, मैं खुद भाई सीखता हूँ, ठीक है, आई एम लर्निंग डे बाय डे, एंड ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। चंदन पहला पॉडकास्ट पे एक सेशन लेने वाला है आई थिंक, तो चंदन पहला भी सीख रहा है, ठीक है, ही इज लर्निंग डे बाय डे एंड डे एवरी डे। जब जब भी वो ये सेशन करता है वो कुछ नया सीखता है, एंड Yes, sir. एंड बाय हिज उसने मुझे आज इवेंट बनाई है, मेरा 4th ऑनलाइन इवेंट है, Okay. एंड इससे मैं सीख रहा हूँ, तो मैं भी डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूँ। ये कंप्लीट इंग्लिश में था, मैंने कभी इंग्लिश में कंप्लीट सेशन नहीं लिया, एंड आई हैव टेकन द कंप्लीट सेशन इन इंग्लिश, सो मैं भी सीख रहा हूँ। तो बस यही है, दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ लर्निंग, यू आर लर्निंग एंड अप्लाइंग थिंग, एंड मोर ओवर आई कैन से इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू इट, कि तुम्हें लगता है कि यार तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज में, चेक आउट माय ट्विटर फाइल, मैं वहां कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा क्या बिल्ड हो रहा है। Yes, sir. Of course, I will see. Cool. I think we can end the session at this point. So thank you so much, Harsh. Thank you so much for coming. I have a and- question. Can I ask something? If Okay. Chandan, Okay. Sure. Go on. Okay, so hi Harsh. So I want to ask that how do I get my what advice would you give someone to who wants to get his first project, freelance project on Fiverr or Upwork? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट मिलना काफी मुश्किल होता है, तो उसको कैसे किया जाए? डू यू नो मैंने कभी फाइवर अपवर्क का यूज नहीं करा है, लिटरल मैंने 2 महीने पूरे बिता दिए गिग्स लगा करके, मेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिले, बट जब मैंने अपने वर्क को व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे शेयर किया, यू नो व्हाट, मुझे 2 दिन के बाद मेरे को क्लाइंट मिल गए। दिस इज द प्रोसेस मैन। तुम्हें नहीं पता तुम्हें अपॉर्चुनिटी किधर से मिलेगी, मे बी किसी के लिए वो फाइवर अपवर्क हो सकती है, इसलिए वो यूट्यूब पे इतना फेमस है फाइवर अपवर्क। मेरे लिए वो ट्विटर है, मेरे लिए वो ट्विटर है, इसमें मैं ट्विटर की बात करता हूँ। तो सेम थिंग इज दैट कि जो देखो यू डोंट नो कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी किधर से मिल जाए, क्या पता तुम ये ब्लू लर्न के डिस्कॉर्ड पे तुम अपना ग्राफिक वर्क शेयर कर रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम यार कितना बेकार बनाते हो, और चंदन पिरला को वो पसंद आ गया और वो जाके बोल रहा है कि यार ये बंदा क्या मस्त बनाता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना कि तुम कैसा बना रहे हो, और भाई चंदन को या ब्लू लर्न के किसी टीम बंदे को उसको लगा भाई ये क्या मस्त बनाता है, इसको हायर करते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज, कि Yes, sir. तुम्हें नहीं पता कि तुम किधर से हायर हो गए। देखो ये अपॉर्चुनिटी तुम देख रहे हो ना, जहां पे ये आके मैं बोल रहा हूँ हाउ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी, अगर चंदन पिरला इसको बताए तो। Sorry, Harsh. So You want me to tell tell these everybody. people? So Okay. tell I think everybody. you would be good. You would be good. You go on. या सो देखो मैंने जैसा बताया कि हाउ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी, देखो मैंने कहा ना तुम्हें अपॉर्चुनिटी तुम्हें सोचनी नहीं पड़ती कि ठीक है तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। मैं इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे आऊंगा, यहाँ पे 2-3 लोग के पोस्ट देख के जाऊंगा और आज मैं यहाँ पे बता रहूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव, यू हैव टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ द थिंग्स। मैं बताता हूँ, आज से शायद कुछ हफ्ते पहले देयर वाज अ सेशन गोइंग ऑन AR, ठीक है, थिंग, और वहां पे वी आर द ब्लू लर्न टीम इज गोइंग टू होस्ट अ सेशन
on that AR filters thing कि how we can build that Spark AR and all. तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मैं थोड़ा सा वो ग्राफिक डिजाइन थंबनेल डिजाइन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना चाह रहा था. आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा ज्यादा सीखेंगे तो क्या जाता है यार, पोर्टफोलियो अच्छा होगा. तो ठीक है, तो मैं उसके लिए आया था, बट वो सेशन अनलकीली नहीं हुआ. एंड देन Chandan Perla asked everyone to open their mic and talk with him. And you know what? I was trying to learn English at that time. You know, I was, because you know what, in the school life, if you are from UP, you know कि English का level क्या होता है.